Question number 24. Which final oral sound is most likely to indicate a non-viable pregnancy? Answer is B. Non-visualization of cardiac activity when crown length CRL is 7 mm. ठीक है बाकी ऑप्शन समझी में क्वेश्चन नंबर 24 में देखो non-visualization of cardiac activity when crown length is 7 mm. इसे explain है कि at 6.5 weeks the CRL is approximately 6.5 mm and cardiac movement can be identified at 6.5 weeks जबकि 5 mm होते हैं. The intra-decidual sign is seen in intrauterine pregnancy. ठीक है अच्छा फिर ये कहता है कि जो they all cycle seen at approximately 5 to 7 weeks and then they get directed to 9 mm. तो ये कह रहा है कि when the normally the heart is seen when the CRL is 5 mm और जब ये 7 mm में non-visualization cardiac activity है मतलब ये कि IUD है तो ध्यान से ना which finding on ultrasound is most likely to indicate non-viable pregnancy, non-visualization of the cardiac activity when CRL is 7 mm. Because normally it can be seen at 5 mm. But if not seen at 7 mm, then there will be non-viable pregnancy. Question number 25. A 60-year-old female is found to have a 20 centimeter complex ovarian mass on ultrasound and a raised CA125 level. What is the next step in management on staging? CT followed by biopsy. ठीक है When the patient has a complex ovarian mass on ultrasound and raised CA125 level, then we should suspect ovarian carcinoma. And what to next step? CT scan followed by biopsy for staging and characterizing the lesion. Question number 26. Complex ovarian mass and raised CA125. What are the findings consistent with her having stage 3 disease? Peritoneal metastasis. ठीक है ओवेरियन कार्सिनोमा की अपनी फीगो स्टेजिंग है और स्टेज 3 में पेरिटोनियल मेटास्टेसिस होती है. अगर हम आप देखें तो फीगो स्टेजिंग ऑफ ओवेरियन कैंसर ठीक है एक सेकंड स्टेज 3 tumor involves one or both ovaries with peritoneal metastasis outside the pelvis. ठीक है तो peritoneal metastasis स्टेज 3 में आ जाती है. स्टेज 1 में ये कि tumor ये आसान याद किया थोड़ा सा सर कुछ नजर नहीं है. आवाज नहीं है सही अभी आ रही है. अच्छा स्टेज 1 tumor limited to ovaries. स्टेज 2 tumor involved one or both ovaries with pelvic involvement. ठीक है और फिर स्टेज 3 जो है ट्यूमर इन्वॉल्व वन और बोथ ओवरीज विद पेरिटोनियल मेटास्टेसिस. ठीक है तो स्टेज 1 अप टू द लिमिट ट्यूमर लिमिट टू ओवरीज. स्टेज 2 with pelvic involvement of both ovaries, and stage 3 tumor involves both ovaries with peritoneal metastasis. Or stage 4 is distal metastasis. Stage 1 tumor limited to ovaries. Stage 2 tumor involves one or both ovaries with pelvic involvement, and stage 3 tumor involves both ovaries, one or both ovaries with peritoneal metastasis. Or stage 4 distal metastasis. ठीक है Question number 27. Pelvic pain and irregular periods. Ultrasound in the left ovary, there was a 4 cm diffuse homogeneous hypoechoic focal lesion with low level internal echoes, where most likely diagnosed endometrioma. ठीक है On ultrasound, there was a left ovary that was 4 cm diffuse homogeneous hypoechoic focal lesion with low level internal echoes. तो ये मेट्रोमा ये है ना ultrasound पर endometrioma है. ठीक है There is a low lesion, homogeneous lesion in the right ovary with internal echoes, low level internal echoes. तो endometrioma है. ठीक है ये कह रहा है ये फिर देखिए पेशेंट की signs symptoms be pelvic pain and irregular periods or sound shows there in the left ovary there was a 4 cm diffuse homogeneous hypoechoic focal lesion with low level internal echoes, most likely diagnosed endometrioma. दूसरे जो आंसर्स में कोई सेंस नहीं हमारा एक मिनट क्वेश्चन नंबर 27. दूसरी फंक्शनल ovarian cyst नहीं हो सकता क्योंकि फंक्शनल ovarian cyst का जो है pelvic pain and irregular period के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और फिर लो लेवल इंटरनल इकोस में नहीं होता फंक्शनल ovarian cyst में. पॉलिसिस्टिक ओवेरियन में नहीं होता क्योंकि इसमें मल्टीपल सिस्ट होती है. ओवेरियन कार्सिनोमा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई CA125 का नहीं कहा गया और जो है लो लेवल इंटरनल इकोस
और अच्छा फिर फोर्थ साइड में डिफ्यूज होमोजेनियस लेजन भी है, ठीक है। फिर कॉर्पस ल्यूटियम नहीं हो सकता क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है इसमें लो इंटरनल इक्वल और हाइपोक्रोइक नहीं होता, इस तरह से पेरिनियल कॉर्पस ल्यूटियम जिसकी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, MRI shows a low signal mass related to right ovary, where the most likely diagnosis ovarian fibroma, ठीक है। ovarian fibroma ये होता है कि लो सिग्नल ऑन MRI होती है। अगर देखें तो ये ovarian fibroma नजर आ रहा है MRI पर, लो सिग्नल मास related to right ovary। एक्सप्लेन पढ़े तो ठीक है। अगर दूसरे ऑप्शन को देखो तो दूसरे ऑप्शन में एंडोमेट्रियोसिस typically high signal routine and patch severity 1 sequence due to methhemoglobin। ये एंडोमेट्रियोसिस में मेथेमोग्लोबिन होती है, ब्लड होती है, तो ये हाई सिग्नल होती है। फिर हेमोरेजिक मास भी हाई सिग्नल होगी, ठीक है। फेमोइड्स भी कभी कभी फैट होता है विद हाई सिग्नल T1, और ये जो है जब ओवेन फाइब्रोमा है तो ये लो ऑन T1 है। तो सिग्नल मास ऑन इन राइट ओवेन, ठीक है, ओवेन फाइब्रोमा। ये बड़ी MCQ पढ़ते हैं कुछ तो कुछ देखेंगे। जैसे 8 30-year-old female with menorrhagia underwent ultrasound examination of the pelvis which demonstrated an extensor lesion. She went on to have an MRI, which on T1 variant images demonstrated a low signal mass related to the right ovary. Was most likely diagnosis ovarian fibroma, ठीक है। Question number 29, which of the following symptoms cannot be explained by the diagnosis of endometriosis? एक मसल्स, ठीक है। उसकी याद रखें एक मसल का endometriosis का कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी सारे जो ऑप्शन है, ठीक है। 35-year-old patient with a history of endometriosis presents a number of clinical symptoms. With the following symptoms cannot be explained by the diagnosis of endometriosis: lump at the side of uh, previous surgical scar, shortness of breath and pneumatic chest pain, onset of menses, hematuria, pelvic pain and feeling of fullness is सब rarely एक muscle नहीं relevant। फिर क्वेश्चन नंबर, ये कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो है जिसमें जो है एक्सप्लेन करने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि देखो इसमें जैसे occurrence in surgical scar, particularly after gynecological surgery is recognized, pneumothorax occurring at the onset of menses also recognized, or failure in the bladder endometrial collapse can cause hematuria, तो इसमें एक मसल आंसर है, बस ये याद करना है। इसमें अब एक्सप्लेन करने का कोई फायदा भी नहीं। बस which of the following symptoms cannot be explained by diagnosis of endometriosis? एक muscle. Which cannot be symptoms cannot be explained by diagnosis of endometriosis? एक muscle. Question number 30. PET CT examination have increased activity in the pelvis. Increased uptake in which organ or area would indicate sinister pathology? Cervix, ठीक है। PET CT has increased activity in the pelvis. Increased uptake in which organ or area would indicate sinister pathology? Cervix, क्योंकि जो है इसमें होता है it indicates cancer होता है। Normal FDG activity is seen in brain, myocardium, liver, spleen, bone marrow, GI tract, testes, and skeletal muscle. तो याद करें कि बस FDG नॉर्मल अपटेक जो होते हैं इनको टिश्यूज में होती है, मायोकार्डियम, ब्रेन, लेकिन जो होते हैं सर्विक्स में बस FDG अपटेक नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। ये दिखा सकता कोई मेटास्टेसिस या कैंसर है, ठीक है। तो इतना याद करें कि पेट CT examination shows increased uptake in the pelvis, increased uptake in which organ indicates sensitive pathology cervix, ठीक है। brain, heart, good lung tissues and the normal uptake होती है। Question 31, a unilocular adnexal cyst measuring 4 cm on transparent ultrasound examination, ठीक है। Unilocular adnexal cyst measuring 4 cm on transparent TVS. What is the most appropriate management? Pelvic ultrasound examination after 6 weeks, ठीक है। याद करें कि cyst, तो cyst में S की बजाय X डालें तो 6 weeks। तो अगर 4 cm हो तो इसकी नॉर्मल मैनेजमेंट ये होती है कि इसका फॉलो अप करते हैं 6 weeks के बाद, ठीक है। याद करें कि cyst तो सी एक्स डालें तो 6 week follow up after 6 weeks ultrasound। 32, 50-year-old female present with dysfunctional bleeding. Assuming that her symptoms are due to a gynecological pregnancy, what is most likely site of disease? Endometrial, ठीक है। 50-year-old फीमेल में जो होता है डिस्फंक्शनल ब्लीडिंग अगर हो ना, तो सबसे पहले आपने कौन सा एंडोमेट्रियल कैंसर को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। ये बहुत कॉमन है 50 ईयर्स के बाद। 50 ईयर के बाद सबसे कॉमन मैग्नेंसी जो होती है मैग्नेंसी, वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है, इसलिए मोस्ट लाइकली साइट ऑफ दिस एंडोमेट्रियल कैंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33,
क्योंकि 50 के बाद जो है थे उनके हार्मोन लेवल भी कम होते हैं, तो ओवरीज अफेक्टेड नहीं होती, सबसे कॉमन एंडोमेट्रियम अफेक्ट होगी। क्वेश्चन 33, what ultrasound appearance would assure you that an intrauterine pregnancy? Double decidal sac sign, ठीक है। डबल डिसाइडल sac sign ये है, देखो, double decidal sac sign, the decidal in the endometrium of the first trimester, seen at 5 weeks, seen as a rounded oval fluid collection surrounded by two ecogenic rings, outer decidua, inner chorion, ठीक है। देखो तो डबल डिसाइडल sac sign और जो है seen as an oval fluid collection, तो ये डबल डिसाइडल sac sign है, ठीक है। This double decidal sac sign shows that there is intrauterine pregnancy. This is number 33.